Hi, good evening, everybody. This is Bishwajit Dutta, Director, Success Ed Education Services, Bhopal, Madhya Pradesh. Success Ed Education Services is a premier institute for CLAT, Common Law Admission Test. And this particular video that I'm going to start right now at this moment is basically for all those students who would be contemplating to go for CLAT 2023. यदि सारी चीजें टाइम पर होती हैं, if everything goes well as per the expected announcement by the consortium, then hopefully in December 2020 we'll be writing CLAT 2023, which is probably 6 months before time. So we have to be alert right now at this moment of time, and we have to start immediately. There is no time left for thinking. There is no time left for contemplating. सभी contemplate तो कर रहे हैं. Now, what all things that we have right now at this moment with us? Number one, we have all the facts absolutely clear in our mind. वो सारे बच्चे जो 12वीं पास कर चुके हैं या जो 12वीं में है या वो जो बहुत नजदीक थे और कर नहीं पाए इस साल because of any of the reasons, उनके सामने सारे facts ready हैं. All the facts that you perceive, देखकर, सुनकर, समझकर, all that is ready in front of you. आपको उन facts को बिल्कुल सही तरीके से analyze करना है. And on the basis of that, you are going to take one of the prominent decisions in life, in fact of life, whether to go for CLAT 2023. सही बोलूं तो ये बहुत बड़ा डिसीजन नहीं है. इट्स नॉट अ वेरी बिग डिसीजन. इट इज नॉट एट ऑल ए वेरी डिफिकल्ट डिसीजन एट द सेम टाइम. इट इज अ वेरी सिंपल डिसीजन. लाइफ में कई बार हम फेल हो जाते हैं. कई बार हमको लगता है कि यार जो हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है, एंड मे बी यू रिग्रेस. आपको लगता है कि चलो पीछे हटते हैं. मे बी आपको लगता है कि चलो मैं अपना लाइन चेंज कर देता हूँ. आई मे चेंज माई लाइन. आई विल गो फॉर ए डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम. मैं बीबीए कर लेता हूँ, मैं बीकॉम कर लेता हूँ, मैं बीएससी कर लेता हूँ. आई एम नॉट सेइंग दैट एनी ऑफ दिस डिसीजन वुड गो रॉन्ग. नॉट एट ऑल. आई वुड से व्हाट यू हैव टेकन एज ए डिसीजन मे बी 1 year बैक, it was also not wrong, is also not wrong, and I believe that in the time to come you may convert that into reality. The only thing that left with you is a matter of fact, and that matter of fact is that you have not selected this year, and you're going to take a very prominent decision to write the exam next year. I mean this year for the next year, and whether you will be able to make that converted in your favor or not is a question. Now I may say that this is a doubt, I may say that this is a challenge, and I may look at it in different perspective as well. कि बच्चे जब एक बार सिलेक्ट नहीं हो पाते तो उनको लगता है कि सर इस बात की क्या गारंटी है कि मेरा नेक्स्ट ईयर में सिलेक्शन हो जाएगा या मेरा नेक्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाएगा. तो कई बार बच्चे इसको डाउट के फॉर्म में भी देखते हैं, कई बार बच्चे इसको अपॉर्चुनिटी के फॉर्म में भी देखते हैं. सो एवरी एस्पेक्ट, एवरी पर्सपेक्टिव is different. Every perspective is different on the part of everybody. Every other person who looks at it seems to be different, seems to be different than the other person as well. जो मेरे को दिख रहा है वो आपको नहीं दिख रहा है, जो आपको दिख रहा है मुझको नहीं दिख रहा है, जो आपको दिख रहा है किसी और को नहीं दिख रहा है, जो उसको दिख रहा है वो थर्ड पर्सन को नहीं दिख रहा है. So it is basically your life and you have to take a decision. What we can understand out of this exam is that what went wrong. क्या गलती हो गई, क्या गलत हो गया जिसके कारण हम इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाए. देयर इज ओनली अ मैटर ऑफ फैक्ट दैट यू हैव टू सिट एंड हैव टू एनालाइज ऑल द बेसिक एस्पेक्ट ऑन विच दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन इज गोइंग टू टेक प्लेस. 2020, 21 एंड 22 तीन पेपर नए पैटर्न पे क्लैट के हो चुके हैं. नाउ एवरीबडी इज क्रिस्टल क्लियर व्हाट इज गोइंग टू बी एक्सपेक्टेड नेक्स्ट ईयर. यू कैन कैलकुलेट, you can presume the paper altogether. Sit with those three papers, 2020, 21 and 22. I can vouch for this that you are absolutely going to calculate what could come next year in CLAT 2023. Anybody can do this calculation.
And somebody who has failed in this exam can also be able to calculate this. So take 1 day or 2 days, sit, write down all the positive points that you think are associated with the exams that you're going to write in the next attempt in December 2022 for CLAT 2023. And then try to figure out, is this a probable chance which could convert into reality? If you find that the chances are in your favor, don't hesitate in taking a decision to prepare for the next exam. I'm not at all convincing, I'm not at all persuading people to take the next attempt. All I'm saying that analysis is the basic reason to decide, find out an opinion, find out a judgment, what is to be done next. So you have to sit together and just have to find out what are the basic aspects on the basis of which I'm going to take the decision whether to write the next CLAT or not. If I know this particular exam is going to give me something great, which I'm 100% going to achieve in the next 5 years, then there is no harm in giving an attempt to this particular exam. At this moment of time, if you're a student of commerce or humanities or biology for that matter, if some people are not happy with the fact that they would like to go for medical and they realize at this moment that I would go for a different set of exams, then this could be one of those options. This could be one of those great options that could change your life and put together. हो सकता है कि इस साल के अटेम्प्ट में आपको ज़्यादा रिस्पॉन्स न मिला हो सकता है आपके स्कोर्स 25 या 30 हो. कई बार ऐसे होता है that you prepared and you wrote an exam and you got 60s, 70s and you could not make it. That would give you a fair amount of idea that if I give another 20%, another 30%, I'm 100% sure that I will convert. But there are some people who have not written this exam with complete preparation and they might have got a score of 25, 30 or maybe sometimes 35. So they may not be able to contemplate. They may not be able to figure out whether to go for it or not. That is the reason why every time we write an exam just to test it out, is there any scope for me for any success further in these exams? You might have seen that in lot many times I said that people whenever come for a crash course is a very short-term program people come for just immediately after the examination, and for the last 2 years the scene has not been created because of the fact that the board exam has very badly hampered, last year because of corona, before last year again because of corona, and this year you could see that recently the board exams are completed, so people could not test it, students, aspirants could not test it themselves during the crash course because the crash course has been completely hampered. And the basic purpose of a crash course is to find out your interest, your affinity, your challenge whether to clear the exam or not. जब वो हो जाता है ना तो ये easy हो जाता है decision making में, which unfortunately not happened this year and for the last 3 years. So there are lot many people who may go for it, and there are lot many people who think that, oh my God, since I got 30 marks, so I don't want to go further, because the fact and the reality says that in the next 6 months of time I may not be able to get it in my favor. So that is a reality check. Unless you prepare things, you won't be able to come out with an idea whether to go for it or not. Alright? So please sit together. This is your life. You are the master of your faith. You are the maker of your destiny. You are the captain of your soul. You are everything in you. You are a complete sum total of what you are today because of the fact that you have been studying for the last 12 years of your life. Now this is a very simple decision that you can contemplate on your own. Once you have done it out of your own knowledge, idea, aspirations, and still you feel that you have a doubt, then sit together with the family, come out with an argument, come out with your sense of disclosing all the reality, disclosing all the facts, your weaknesses, your strength in front of your parents, and then come out with a solution. उसके बाद भी यदि आपको लगता है you still need somebody as an expert who could help you out, then we are open to reach every moment. बहरहाल अभी हम थोड़ा सा ये बात करेंगे what is to be done for the next exam, since we have only 6 months of time. July, August, September, October, November
and in December, maybe not even 6 months. यदि कंसोर्शियम ने जैसा प्रॉमिस किया है, यदि पेपर उसी टाइम पर होता है तो मे बी हमारे पास 6 महीने का टाइम भी नहीं है, और यदि आगे जाता है तो definitely would be getting some more time, but as of now we have very less time. We cannot give up even a single day, because every day, every moment and every second is precious for all those students who are in the range of 40s and 50s. इतना तो आपको भी समझ में आ गया होगा that 70 तक लाने से आपका काम नहीं बनेगा, unless you crossed 75, at least I would say 80, बात नहीं बनेगी. To get 80 marks out of 150 is not a very tough task, but आपको इतना पता होना चाहिए that I need to score a minimum of 80 marks in order to get into any national university. And of course, to lot many people, getting 150 is a big challenge. 100% is a very big challenge, and that too to be recovered in the next 5.5 months. I would say 6 months of time. We are very, very enthusiastic to figure out that this is a challenge of working for the next 5.5 to 6 months of time and try to deliver one of the greatest results in the upcoming exam. So we have a very less time. So dear students, अब बैठिए आराम से, डिसाइड करिए पेरेंट्स के साथ, अपने आप बैठिए अपने साथ में and try to figure out what are your strengths and weaknesses, on the basis of which you can take up a decision whether to go for it or not. लेकिन एग्जाम को कैसे आपको तैयार करना है, you know that very well. There are 5 sections, बहुत अच्छे से आपको पता है, and every section has a certain demand. Now there are certain revealing facts that I am telling you one by one. Number one, you look at the passages, whether it is on critical reasoning or it is on English, you will find there are certain varieties of questions that are very, very common. See, when I read something, I need to know, first of all, I need to figure out, I need to calculate what exactly been talked in that particular format of writing. What is the author trying to convey in that particular writing? उसका सार क्या है, उसका conclusion क्या है? Try to read as much as possible. See, I'm telling you, people from the very first day, they start writing mocks. Writing mocks is a very good habit, but you will find there are a lot many people who have written hundreds of mocks and failed miserably. Just because that they could not figure out, when I read something, what is to be thought about, what is to be felt about that writing which I have read, written by somebody, an XYZ person has written it, and I have read it. After reading, what I'm grasping, what I'm understanding by that, and with that I need to calculate some of the very important questions. हर पैराग्राफ में से ही सवाल बनते हैं. तो आप यदि किसी भी एक पैराग्राफ को देखोगे, किसी भी आप एक पैसेज को देखोगे, if it has 3 paragraphs, let's say, you are bound to have at least 1 question from each of the paragraphs, and 2 questions, maybe one overall writing of the passage, and one may be something which is related to any vocabulary or any grammar or anything else. So there are certain very common tactics that you need to learn. Try to learn the common tactics which is invariably applied to all the variety of write-ups, whether it is on critical reasoning or it is on English and so on. तो पहला काम आपको खूब पढ़ना है. You have to make lot of readings and lot of readings. दिन भर आपको रीड करना है, दिन भर, because for the next 5.5 months of time you don't have anything to do other than reading and reading. It may be a novel sometimes, it may be a newspaper sometimes, it may be a magazine sometimes, but reading is one of the very most important element for this exam, and that we have to exercise on a daily basis. And after reading, you need to collect very important words in the form of vocabulary. Do not try to collect random vocabulary from the vocabulary books, because I know that most of the people, when they prefer a particular vocabulary books, they are bound to get certain books, certain words that are very common. But telling you very frankly, what is happening in the news across the country or across the world, and if you're reading that, there are certain vocabularies that out of the box you're finding, and you have to collect those vocabulary words. Try to have a separate piece of copy, separate piece of notebook wherein you are going to count all those vocabularies.
वेरी इंपॉर्टेंटली जीके पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंटली आपको एक कॉपी ऐसी बनानी है जिसमें आप हर महीने के जितने सारे इश्यूज होते जा रहे हैं एक के बाद एक, आपको उस इशू का नाम लिखना है। और जीके पढ़ने का बेस्ट हो सकता है, ट्राई टू मेक ए ग्रुप ऑफ 3 people of the same temperament who feel like giving the best in the exams. Try to collect 3 people, not more than that. You can have this activity done with 2 people in a team, or you can have 3 people and do it, no problem. So all of you individually have to write out the important events that have been done in that particular month. Let's say for example, we have recently फिनिशिंग जून 2022, जून के अंदर जितने सारे इवेंट हुए हैं, ऑल ऑफ देम, जितना आप कलेक्ट कर सकते हो, ट्राई टू राइट देम इन ए पीस ऑफ कॉपी वन बाय वन. दैट वुड बी एक्ट एज एन इंडेक्स. सो व्हेनेवर यू विल बी you will be turning the pages of the index and read those events, you will be able to associate with the important informations that are connected with those index, those elements, those headings. फिर आपस में आप क्रॉस चेक करें दोस्तों के बीच में, वन फ्रेंड विद द अनदर, सेकंड 1 2 3 3 फ्रेंड्स आपस में मिलके, दैट आई हैव कवर्ड दिस पर्टिकुलर टॉपिक, आई हैव कवर्ड अग्निवीर योजना, I have covered this, I have covered this, I have covered this, I have covered this. You will find some of you have covered something which the other person has not covered. That means you will find many mutually exclusive topics, and that would help you to cover up further. And this way you are going to make a very fantastic index, thereby make yourself completely updated and prepared for the exam. That too in current affairs. ऐसे करके आपको करंट अफेयर्स तैयार करना चाहिए, और it would definitely going to help you. 3 friends put together can do a miracle, right? So choose your best 3 friends whom you think that they are going to add lot of value in your preparation, और शुरू कर दो उसको. ठीक है. इंग्लिश और क्रिटिकल रीजनिंग के लिए बहुत कुछ आपको पढ़ना है, बस आपको पढ़ना है, और आपको पढ़ने के बाद यू हैव टू जनरेट योर एन ओपिनियन. देखो आज के इस पेपर में ना, व्हेन इट कम्स टू क्लैट 2022, लुकिंग एट दोस पेपर्स and believing those fact that CLAT 2023 is also going to happen like that. आपको पता है आज के टाइम पे इंसान को जजमेंटल होना बहुत जरूरी है. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको जजमेंटल इसलिए होना है बिकॉज एवरी अदर पर्सन इज गोइंग टू आर्ग्यू विद यू. नो, जजमेंटल आपको ये होना है, इसलिए होना है बिकॉज अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ ए पर्टिकुलर पैसेज. You have to find out the answers of certain questions based on a passage, alone sitting in the examination hall. आपको ये कोई नहीं बताएगा कि इसका आंसर क्या होगा. आपको पता है ये सारे आंसर्स आप पढ़ के नहीं जा सकते, इतना तो आपको समझ में आता ही होगा. You cannot find out the right answer of any question because it differs from person to person based on the perception of a person. हमको अपना परसेप्शन क्रिएट करने में पता है आपको कई बार 20 साल लग जाते हैं. बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका कोई परसेप्शन ही नहीं होता है. उनको जैसे आप बोलोगे वो ऐसे ही करते हैं. आप बोलोगे ये पढ़ो तो पढ़ते हैं, आप बोलोगे ये पढ़ो पढ़ते हैं, आप बोलोगे इस पे मेहनत कर लेना, चलो इसमें पूरा परसेंटेज पढ़ लेना, मैथ्स का पढ़ लेंगे, वो बहुत बढ़िया करेंगे. आपको पता है ये जो है ना, ये पैटर्न बढ़िया है कुछ पर्टिकुलर टाइप के एग्जाम्स के. 2020 से जो पैटर्न चालू हुआ ना, इनफैक्ट 2020 ऑनवर्ड्स, the kind of paper that you are reading, bound to develop a certain type of opinion, certain type of perception, and without that probably you cannot do this paper. तो रीडिंग आपको इसलिए करना है क्योंकि आपको अपना परसेप्शन डेवलप करना है. मैं तो कहता हूं कि कितना गलत परसेप्शन डेवलप क्यों ना होता है, लेट इट बी. क्योंकि हर आदमी का ना एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है किसी चीज को पढ़ने के बाद रिएक्ट करना. रिएक्ट करने का मतलब ये नहीं है दैट यू आर गोइंग टू डू एन आर्ग्यूमेंट aggressively with the other person. आर्ग्यूमेंट अपने आप से करना, दैट आई रेड दिस और ऑथर ने जो लिखा ऐसा नहीं है, ऑथर जो कहना चाह रहा है वो फालतू है, एब्सर्ड है. बिकॉज ऑथर जो बता रहा है, पैसेज में जो चीज बताई जा रही है, दैट इज ऑल्सो एन ओपिनियन एग्जिबिटेड बाय समबडी. और हो सकता है कि आप उससे इत्तेफाक नहीं रखते हो, तो मे बी यू हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ ओपिनियन, बट ओपिनियन बन ही नहीं सकता अनलेस यू रीड.
So what is demanding? We are over demanding from every child to read whatever that you can. Whatever that, मतलब ये नहीं कि आप मार्केट में जाओ कोई भी पुस्तक उठा लो. I'm telling you, you have to read variety of things. Sometimes that are based on fact, sometimes those are based on lot of discussion, sometimes things that are based on lot of analytical arguments, sometimes those are based on lot of reasoning arguments, sometimes those are based on an idea of an understanding of a particular topic. मैंने जब आइलेट का पेपर देखा उसमें जो पहला वाला पैसेज था, छोटा सा पैसेज था, आपको पता है उसमें ना कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट की बात करिए. मतलब जब आप कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के बारे में पढ़ते हो ना तो आपको पता चलता है कि यू आर टॉकिंग अबाउट सस्टेनिंग डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ. भाई मेरा एक सिंपल एनुअल ग्रोथ रेट हो रहा है तो मेरे को फायदा थोड़ी कर रहा है, बिकॉज दुनिया में महंगाई भी बढ़ रहा है, दुनिया में हर चीजों का रेट बढ़ रहा है, दुनिया में आपके एस्पिरेशंस बढ़ रहे हैं, तो आप सिंपल एनुअल ग्रोथ रेट पे तो काम नहीं कर सकते. Whenever I talk about compound annual growth rate, we basically talk about the sustainability. उस पूरे पैसेज में ना इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी की बात करिए, बट नॉर्मली व्हेन यू पुट अप रीडिंग यू वोंट अंडरस्टैंड. Why? Because these are certain financial terms. You will find out these particular terms very commonly used in the financial market. So I'm telling you that you need to create a diversity in terms of reading. Now you cannot argue at this moment of time कि सर मेरे को इसमें मजा नहीं आता मैं नहीं पढ़ूंगा, सर मेरे को फाइनेंशियल टर्म समझ में नहीं आता मैं नहीं पढ़ूंगा. No, that cannot be done. You have to recreate, you have to change your idea of thought process and try to learn each and everything, because you cannot evaluate that this is going to come in the paper. लोगों ने 150 मॉक किए इस साल, पता है आपको? किसी के भी मॉक से कुछ भी पेपर में नहीं आया, कुछ भी नहीं आया. ठीक है, सिवाय वो 15 क्वेश्चंस जो मैथमेटिक्स में आए हैं जो हर व्यक्ति कर सकता था, बिकॉज क्योंकि फैक्ट थे. देयर आर सर्टेन वैल्यूज एंड समबडी इज आस्किंग टू कंपेयर दोज वैल्यूज and exhibit in the form of a ratio or compare those values and tell me what is the growth percent, what is the degrowth percent and so on, जो दुनिया में अगले 100 साल तक चेंज नहीं होगा. Those are certain constant things that are going to happen next year. Rest assured that nothing is going to be common for the next year. इसलिए जितना हो सके you try to read lot of material with lot of diversity across the fields that are available to you as a student. आपकी क्रिटिकल रीजनिंग अच्छी हो जाएगी, आपकी इंग्लिश अनडाउटेबली अच्छी हो जाएगी. वोकैबुलरी की कॉपी जरूर बनाया. ऐसे तो लोग कहते हैं सर वोकैब तो आता नहीं, पर वोकैबुलरी का फायदा होने से टेक्स्ट को समझने की ताकत बढ़ जाती है, और ऐसा होता है और ऐसा होगा आगे भी, आप मानो या आप ना मानो. तो देयर आर सर्टेन एलिमेंटरी प्रिपरेशन जो आपको करनी पड़ेगी इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट यू मे अंडरस्टैंड एट वेरी फर्स्ट मोमेंट कि सर इससे फर्क नहीं पड़ता है, बट टेलिंग यू वो छोटे छोटे जो एड ऑन्स है दैट पुट टुगेदर गिव अस लॉट ऑफ डिविडेंड. इट इज वेरी नॉर्मल साइकिल ऑफ लाइफ. एज यू ग्रो सो यू बिकम मैच्योर. तो जैसे जैसे आप छोटे छोटे एड ऑन करोगे 100% इट इज गोइंग टू एड लॉट ऑफ वैल्यू इन योर प्रिपरेशंस. तो सीआर और इंग्लिश के लिए खूब रीडिंग करना, लॉट ऑफ वोकैबुलरीज आपको डेवलप करनी है. नंबर 1. जीके के लिए 3 लोगों का फ्रेंड्स चाहिए जो आप जैसी सोच रखते हैं, और तीनों का इंडेक्स होना चाहिए, और तीनों के इंडेक्स बनने के बाद आपस में उस इंडेक्सों के ऊपर चर्चा होनी चाहिए ताकि एक व्यक्ति को पता चले अगले व्यक्ति ने क्या क्या इंडेक्स बनाया, क्या मैंने छोड़ा है. एंड दिस वे यू हैव टू ब्रिंग लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इन योर प्रिपरेशन व्हेन इट कम्स टू जीके. आपका 3 सेक्शन ऐसे ही तैयार हो जाएगा. लीगल रीजनिंग पता है आपको 2 साल से कॉन्ट्रैक्ट बहुत आ रहा है. कॉन्ट्रैक्ट 2 साल से बेहतरीन तरीके से पूछा जा रहा है. व्हेन इट कम्स टू टॉर्ट, क्राइम एंड कॉन्ट्रैक्ट, टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली, कॉन्ट्रैक्ट इज द मोस्ट लॉजिकल एंड लीगल डॉक्यूमेंट व्हेन इट कम्स टू लॉ. और बहुत सारे बच्चे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872 को पढ़ते तो हैं, बट उस पर प्रॉपर नोट्स नहीं बनाते, और नोट्स बनाते भी हैं तो रिवीजन नहीं करते. पता है लॉ में जब आप रीड करते हैं ना, every reading will bring every new perception. मैं जब भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872 पढ़ता हूं ना, हर बार एक नया परसेप्शन डेवलप होता है,
हर बार आर्ग्यूमेंट रिफाइंड होती है, हर बार सोच बियॉन्ड जाता है। मतलब ये मैं ये नहीं कहता हूं कि बहुत सारे सवाल आए थे इस बार इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कॉन्सेप्ट को लेकर, प्रिंसिपल को लेकर, आधार बना के, बट फ्रैंकली स्पीकिंग कि ये फिर होगा। मैं ये नहीं कहता कि टॉट नहीं आएगा या क्राइम नहीं आएगा, डेफिनेटली दीज आर दी पार्ट्स ऑफ द सिलेबस, and the examiner is bound to bring some kind of judgment or the perception in the paper and try to make questions out of it. Now how would you create a perception unless you read it? रीड तो करना पड़ेगा। तो पेपर को देखकर ये मत समझ लेना कि आपको लॉ ऑफ टॉट्स पढ़ना नहीं है, उसके अंदर अंदर के रिफाइंड प्रिंसिपल्स आपको पढ़ना नहीं है, वेदर इट इज निग्लिजेंस और वाइकेरियस लायबिलिटी और डिफेमेशन और न्यूसेंस और नेग्लिजेंस, व्हाटएवर, आपको पढ़ना पड़ेगा। एज यू रीड मोर एंड मोर, so you get more and more perception, and when there is a diversity in the perception you create lot of creativity ऐसा थोड़ी आता है यार, आग बंद करके क्रिएटिविटी नहीं आएगी, इसी से आएगी। एंड द सेम थिंग यू नीड टू इंप्लीमेंट ऑन द क्राइम एज वेल। बहुत इंटरेस्टिंग है, राइट, क्राइम बहुत इंटरेस्टिंग है, बट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो है कॉन्ट्रैक्ट में। लास्ट ईयर तो भरा हुआ था कॉन्ट्रैक्ट, इस साल भी कॉन्ट्रैक्ट के सवाल थे। क्राइम एक्सपेक्ट किया था, क्राइम नहीं आया बिल्कुल भी। सो ट्राई टू हैव लॉट ऑफ रीजनिंग इनटू योर परसेप्शन व्हेन इट कम्स टू लीगल रीजनिंग। ट्राई टू रीड एनी ऑफ द लीगल डॉक्यूमेंट्स एंड ट्राई टू ब्रिंग आउट द बेस्ट आउटपुट फ्रॉम दैट। मैं आपको एक साइट बताता हूं, उसका सब्सक्रिप्शन ले लो आप, लाइव लॉ, बहुत बढ़िया साइट है, ठीक है। लगभग सारे प्रोमिनेंट जजमेंट्स उसमें आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के। मेरे ख्याल से 600-700 रुपये का सब्सक्रिप्शन होता है 6 मंथ का, मैंने लिया था, और 900 रुपये का उसका ईयरली सब्सक्रिप्शन है। अभी तो कम भी कर दिया है, जब मैंने लिया था तो 6 महीने का लिया था और वो कुछ 450-500 का था, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, फिर मैंने उसको रिपीट किया। बट आप उसका सब्सक्रिप्शन लो, बहुत बढ़िया है डॉक्यूमेंट, और बहुत अच्छे उसमें आपको सारे केसेस मिल जाएंगे, एंड उसको इम्प्लीमेंट करो बहुत जमकर। कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स के एकदम बढ़िया से बारीकी से पढ़ो, परसेप्शन डेवलप करो, आर्ग्यूमेंट डेवलप करो, तो लीगल रीजनिंग में डेफिनेटली आपके जो थॉट प्रोसेस है वो बढ़ जाएंगे। और मैथ्स में जितना हो सके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये करते रहो। रेशियो, एवरेज, परसेंटेज, इन 3 पर रोज घिसते रहो, जितनी घिसाई कर सकते हो उतनी घिसाई करो। 8-10 दिन खूब जम के प्रिपेयर करके बिना पेन के करो। लुक एट अ क्वेश्चन, रीड ए डॉक्यूमेंट एंड ट्राई टू कैलकुलेट इन योर माइंड। माइंड से मेरा मतलब है कि आप लंबा कैलकुलेशन माइंड में केवल और केवल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हो, खास करके मल्टीप्लिकेशन। तो डबल डिजिट के मल्टीप्लिकेशन को कितना सटीक कर सकते हो, ट्राई टू डू इट। इस साल का पेपर उठा के देख लो, सारे नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन के ऊपर पूरा का पूरा पेपर था, एंड पीपल हु हैव नॉट अटेम्प्टेड इट दे डिड नॉट रियलाइज। तो रियलाइज कब होगा, जब अपन इसको अटेम्प्ट करेंगे। सो दिस वे यू कैन मेक योर प्रिपरेशन डन, एंड यू आर वेलकम टू जॉइन अस। वी वुड बी helping you all the way throughout the season. CLAT 2023 in an online format you can prepare absolutely, and we can help you out throughout the preparations with all those material which is required, absolutely new with respect to what is happening across the world, across the country, with respect to all the 5 different sections. Very refined material and everyday lectures that will help you round up, that will help you to resolve each and every doubt that comes in your mind, whether it is related to any kind of doubt that comes in your mind, or it is related to anything which is required to make you prepare one step for the exams, to help you ahead further and further and further. And tomorrow I feel like discussing as to how the people in 2022 would be doing with respect to the first announcement list, जो कि आज हुआ है. I could see lot many people are writing something. Thank you. Good evening, Pranjal. Shreya, good evening. Hello, sir. Harshit Raj, thank you so much. Good evening, everybody. Shazia, I have filled the option for a revise, but if did not fill the required document before the second allotment list, my seat won't be there. In that scenario, will I get my counseling fees back?
शाजिया, यदि आपको सीट अलॉट हो गया है फॉर एन एग्जाम्पल, तो आपको सारी चीज अभी भरनी है और आप क्या करें, अपग्रेड का ऑप्शन मेंटेन करके रखें, ठीक है। यदि लास्ट तक वो आप उसमें आपको देंगे कि इतने तारीख के बाद आपको ये ऑप्शन देंगे कि आप विड्रॉ कर लीजिए, आपको लगता है कि आपका मनपसंद कॉलेज आपको नहीं मिला, तो अब आप जाकर विड्रॉ कर पाएंगे। यदि आपका नाम फर्स्ट अलॉटमेंट सीट में आया है और उसके बाद कहीं जाके आपको लगता है कि मेरे को विड्रॉ करना है, तो मेरे ख्याल से छोटा सा अमाउंट कट के आपका पैसा वापस आएगा। वो वैल्यू मैंने देखा नहीं अभी, कल मैं देख करके इसके बारे में कमेंट करूंगा। और यदि आपका नाम बिल्कुल नहीं आया फॉर एन एग्जाम्पल, द होल मनी 100% मनी वुड बी रिफंडेड। थोड़ा टाइम लगता है बट रिफंड आ जाता है, सो डोंट वरी अबाउट इट। श्रेया, मैं इसके ऊपर एक बढ़िया वीडियो बनाऊंगा, श्रेया शर्मा। श्रेया, आप मेरे को फॉलो करिए। मैं आपको इसके ऊपर एक शानदार वीडियो बना करके दूंगा कि मैथ्स को आप कैसे करें, क्योंकि लोग मैथ्स को लास्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं इस पेपर में, क्योंकि पेपर चेंज हो गया 2019 के बाद। पेपर का पूरा मॉडल चेंज हो गया। पहले मॉडल में आप मैथ्स को 5th में रख सकते थे, 5th सेक्शन में रख सकते थे। अब मैथ्स आपका 5th सेक्शन हो ही नहीं सकता। तो आई विल बी मेकिंग ए प्रॉपर वीडियो why maths has to be taken before some of these sections in order to get more marks in the exams. I'll make a particular video for that, make you realize that yes, what I'm saying is absolutely correct, right? So don't worry about it. प्रांजल, what I was saying, लाइव लॉ करके, लाइव LIVE लॉ, लाइव लॉ करके एक आपको पोर्टल मिल जाएगा। बहुत ही इंफॉर्मेटिव पोर्टल है, बहुत बढ़िया है, मैं उसको फॉलो करता हूँ, आप भी फॉलो करो। उसमें थोड़ा सा चार्जेस वगैरह लेते हैं वो, वैसे वो फ्री भी है, बट यदि आप चार्जेस लेके करोगे तो क्या होगा, तो उसमें एडवर्टीजमेंट वगैरह नहीं आती है, एकदम पूरा डॉक्यूमेंट बहुत बढ़िया से मिल जाता है आपको। और उसमें जजमेंट जो हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है, वो जजमेंट लेटर भी आता है उसमें। तो यदि आप 2 मिनट के अंदर उसको पढ़ लोगे, वो छोटा सा रहता है जजमेंट, पूरा जो केस है उसका छोटा करके उसको बहुत ही एकदम ब्रीफ करके उसको फाइनली समझाते हैं। एंड अप्लाइंग द सेक्शंस ऑफ लॉ मेक यू फील दैट यस यू आर जस्टिफाइंग द आर्ग्यूमेंट ऑफ द लॉयर एंड द जजमेंट इज कमिंग आउट एब्सोल्युटली फेयर। तो ऐसे आपको लगेगा उसको पढ़ के, तो लाइव लॉ करके बहुत सपोर्ट करेगा आपको। यू मस्ट टेक इट, आपको लेना चाहिए, सभी को लेना चाहिए, है ना। तो उसको आप रखोगे तो आई थिंक दैट इज गोइंग टू हेल्प ए लॉट। एंड यस, ऑफ कोर्स, द लास्ट थिंग, द मॉर्निंग बैच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 6th of this month, that means July, and we'll be having 4 hours on a daily classroom program. Daily basis पर रहेगा ये for all those 7 days of the week, and every week we have a mock that we'll be doing it on Sunday. So 6 दिन लगातार class, and then Sunday we'll be having the mock, and this will be continued till the next examination. So all the interested candidates, if you think that you would like to be a part of it, you can be a part of it, and उसमें पूरा 1 हफ्ते की क्लासेस आपकी एब्सोल्युटली फ्री है, देयर वुड नॉट बी एनी चार्ज। आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना है, दैट इज सक्सेस एड एजुकेशन सर्विसेज फ्रॉम प्ले स्टोर। ऐसा करने के लिए आप ऐसे करने पर आप उसको सेलफोन से भी देख सकते हो, आप उसको टैब से भी देख सकते हो, आप उसको लैपटॉप से भी देख सकते हो, आप उसको डेस्कटॉप से भी देख सकते हो, ठीक है। सेकेंड, आप कितने बार देख सकते हो मूवी, कितने बार देख सकते हो वीडियोस को, कितने बार, एनी नंबर ऑफ टाइम्स, एन नंबर ऑफ टाइम्स, नो रेस्ट्रिक्शंस। उसमें आप बात भी कर सकते हो, जब भी आपको डाउट आएगा आप उसमें अपने वॉइस में बात भी कर सकते हो फैकल्टी से। सो वी हैव एवरी पॉसिबल ऑप्शन अवेलेबल। और ऐसा नहीं कि आज से है, ये 2020 से है, ठीक है ना। सो यू विल बी फाइंडिंग एवरीथिंग विच इज फॉर दिस एग्जाम, एंड लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स वी डू ऑन ए केस, जो आपके साथ 1-to-1 कर सकते हैं, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट यू आर इन अरुणाचल प्रदेश और यू आर इन सम अदर प्लेस। और आज अरुणाचल प्रदेश से एक स्टूडेंट जो सिलेक्ट हुआ है, फेल्ट वेरी हैप्पी। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे जो है जब न्यूज़ देते तो बड़ा मज़ा आता है। तो we can help them out all the way across the places, nothing to worry.
And I can only promise you that at the end of the season, you will not at all regret. You will not at all regret. And we'll have a lot of great things to happen in the class. So hopefully, we'll again come out with something new. And this will help us to make a harmony in terms of understanding the problems of the student, realizing their problems and try to resolve them as quickly as possible. So join us, Success at Education Services, for CLAT 2023. And people who have recently done 10th standard, they can also be a part of a 2-year program, either in all 6 days program or in 4 days, 5 days program. Right? So thank you so much. May God bless you. Have a great evening and may God bless you. Bye-bye.